With just a few days left for CAT, you want to be sure that your test taking strategy is in place. आपने conceptually अपने आप को काफी improve कर लिया होगा, revision कर लिया होगा, मगर CAT and all of these MBA entrance exams, but especially CAT is more about how do you attempt the paper, what is the temperament you enter the room with and carry through the entire 2 hours. In this video, I'll be talking about the attempt strategy for VARC. VARC में आपकी attempt strategy क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है. Do not watch this video if you're already scoring well in VARC. अगर आपकी 90 percentile plus आप already mocks में ला रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है. आप इसको देख के अपना समय जाया मत करिए. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher, and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. So let's quickly head on to what should ideally be your attempt strategy in VARC. Before that, some very important things which you need to recap. You know this already. आप अगर पिछले कुछ महीनों से अगर VARC CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये डेटा मालूम है, बट जरूरी होता है मुझे दोबारा प्रेजेंट करना, बिकॉज इससे मैं एक बहुत बड़ा इन्फ्रेंस निकालने वाला हूं, जिससे आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो सडनली यू विल गेट क्लैरिटी इन योर माइंड. ऑल्सो आई वुड अगेन लाइक टू reiterate this. You are watching this video only because you're scoring less in VARC. If you're scoring good in VARC, please drop away right now. You don't need to watch this. आपके पास समय नहीं है. I am not a content creator that I'll say कि no, watch it up till the end and there's a surprise up till the end. No, my job is to genuinely tell you what is for you, what is not. Therefore, this is for somebody who is really suffering and struggling in VARC, and उसको भी चाहिए कि यार कुछ लास्ट में कुछ अटेम्प्ट करने का कैसे क्या करा जाए, बिकॉज VARC में तो फिर भी नॉलेज एक्विजिशन नहीं है. तो देखिए, सिंपल सी चीज है. VARC is 24 questions, 16 questions in RC, 8 in VA. What is expected? Now, the total score obviously becomes 72, and the time you have to do these questions is 40 minutes for the section. The data which I've presented to you is from last year's CAT, which is CAT 2023 में VARC में various percentiles के लिए कितना score and therefore कितने net correct questions करने होते हैं. मतलब अगर 99.9 percentile के लिए 55 का score out of 72 score चाहिए, that means out of the 24 questions you need to get 19 questions net correct. Now, I am going to give you the attempt strategy, but before that I want to make one big statement here. Across the 3 sections, which is VARC, DI, LR and QA, VARC is that one section in which I and other very knowledgeable educators will always advise you that in VARC your strategy should be to maximize your number of attempts. Ideally, your number of attempts should be 100%. Ideally, this is the fact. You would hear this from a lot of other educators, and it is true. Because why? You need to understand this. VARC is not so much of a game of accuracy. VARC में आप कभी भी एक definite answer निकाल नहीं सकते unless and until you are really good in VARC, you are really good in English. अगर आप एक average student हैं, बहुत बार आपके साथ होता होगा कि आप 2 options में confused हैं, और जब आप बाद में analysis में आते होंगे, then you would be कि हाँ यार ये भी सही लग रहा था. Because of that, because your accuracy tends to be lower as compared to the other 2 sections, which is QA and DI, LR, where you can still find definite answer कि इसका आंसर है 32 टिक मार्क ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं है. Therefore, VARC की strategy होती है to maximize your attempts. Now, you might say ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है. What is the proof? आप तो कुछ भी कह रहे हो कि maximize attempt. There is proof also, and that is why I had shown you this slide. If you look at the score required for 99.9 percentile in VARC, that is 55. जब तक आप 55 का स्कोर नहीं लाते हैं, तब तक आप 99.9 percentile नहीं ला सकते. The same score, the score required for a 99 percentile, here is what you need to know now. The score required for a 99 percentile, the same figure for a DI LR is only 40. मतलब अगर आप 40 मार्क्स लेके आएंगे DI LR में, आप 99.9 percentile लेके आ जाएंगे. वो बात अलग है that yes, उसमें number of questions are 4 कम इससे. There are 20 questions in that, but still what I'm trying to explain to you is that there is more score requirement in VARC. Usually the strategy is that, hey, because you cannot have so much control on your accuracy, the more control you can have is on your speed. And yes, while you are working on the speed, अगर आप ये वीडियो या मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे थे, you would know कि मैं हमेशा करता हूँ एडवाइस कि
अटेम्प्ट करिए सारे एंड साइड बाय साइड अपनी एक्यूरेसी पे इंप्रूव करते रहिए. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, लेट मी टेक यू टू व्हाट शुड बी द अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फॉर VARC एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बहुत कुछ ड्रामा नहीं है, बहुत कुछ एक्शन है नहीं. You always have two options in front of you, whether you should attempt RCs first or whether you should attempt VA first. Now here is one piece of advice which I would say to you. अगर आपके पेपर में RCs और VA jumbled भी हैं, jumbled means पहले 2 सवाल थे VA के, उसके बाद 4 सवाल आ गए, एक RC फुल RC, फिर आ गए आपके पास 4 सवाल ऑफ VA. Do not go in that flow. Okay, so first I'll do 2 VA, then I'll do 4. Ideally not. Ideally, focus your mind either first on RCs or on VA. You will be much more quicker, much more faster because your brain is attuned to solving one thing in one flow. That is why the two options which usually students follow, the best of the students, what they usually follow is that either they say that hey, we are more comfortable with solving RCs first or we are comfortable solving VA first. दोनों के फायदे हैं, सही और wrong कुछ नहीं है. If you were to ask me as a student, when I was a student and still my preferred strategy for myself is to do RC first because that gives me confidence. मेरी VA RC वैसे भी अच्छी है तो मुझे मालूम है अगर मैं फटाफट RCs करके, because उसमें आंसर्स वहीं पे दिए हुए हैं सामने ही, मैं RCs करके ज्यादा स्कोर लेके आ सकता हूँ. एंड ऑब्वियसली बिकॉज 16 क्वेश्चंस आर RCs, मुझे वैसे भी RC अगर मैंने सारी क्रैक कर ली तो मैं बड़े अच्छे से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ. माई स्ट्रैटेजी इज दैट, बट इट कुड बी दैट. आई विल गिव यू बोथ द स्ट्रैटेजीज. वैसे नाउ यू नो दिस दैट VA has 8 questions. My submission to you is that in your mind you need to operate with time clarity. Hello, the secret to an attempt strategy कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत उसमें साइंस नहीं है, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है. The entirety of an attempt strategy is based on whether you have time clarity. Along with that, you have the clarity of when do you feel more energized to solve certain kind of questions. But let's not go there. Let's simply speak about that attempt strategy is about कि आपको 40 मिनट को कैसे ब्रेक करना है, उसकी टाइम क्लैरिटी है या नहीं है. उसके लिए माई सबमिशन टू यू इज, माई हिदायत टू यू इज, VA के 8 सवाल के लिए आप लगभग 10 मिनट रखिए. उससे ज्यादा भी कर सकते हैं बट एटलीस्ट 10 मिनट तो चाहिए अगर, एंड दैट्स दैट. एंड फ्रॉम देयर नेचुरली for RCs do not go beyond half an hour. Again, you have to understand this. In RCs, I am saying at max 30, which means that it could be lower than 30 also, but at max do not go beyond half an hour in RCs because the moment you feel कि यार 16 क्वेश्चन है, चंक मेजर चंक तो RCs है, let's give more समय to RC, आपके पास VA करने का टाइम ही नहीं होगा. एंड VA में बहुत सवाल बड़े आसान होंगे जहां पे आप 3 नंबर 6 नंबर 9 एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ सकते हैं, which could be game changers. So this should be your mota time clarity in your head that RC should be approximately half an hour and the remaining 10 which I get is for VA, which is what is there on your screen. Now, basis whichever you choose. Okay, one more thing which you need to understand is that if you are saying that, if I'm saying that half an hour is what you have for an RC, for the entire set of RCs, you get 4 RCs, which means half an hour को divide करें by 4, roughly you get 7.5 minutes per RCs. My question to you is, pause the video right now and let me know in the comments कि जब आप एक मॉक अटेम्प्ट करते थे आज तक या जब आप अब अगले हफ्ते कैट में जाने वाले हैं, क्या आपको ये टाइम क्लैरिटी थी कि अगर you want to score the highest in VA RC and if you say that hey VA RC is my strength, did you operate with this time clarity कि देखा जाए तो मेरे पास एक RC पे इन्वेस्ट करने के लिए 7.5 से ज्यादा नहीं है. Obviously I am not saying वो घड़ी के हिसाब से 7.5 ही होगा. It could be that for some RCs you take 8.5 minutes, for the other RCs you take 6 minutes. It could be that, but on an average it should be around 7.5 is what you should keep in your mind. Otherwise how will you check whether I am on the right pace or not? All of these things which I am sharing with you कि यार you know अपने जहन में डाल लो कि 7.5 मिनट एक RC, ताकि जब आप वॉच
देख रहे हो सामने, when you are looking at the clock, when you are looking at that thing, you know कि अरे यार अब समय ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, which approximately means कि you would read the RC in about 3 minutes and you have solving के लिए around 4.5 minutes. अब ये मैं ज्यादा स्पेसिफिक चला गया, but you broadly you actually understand कि आपको समझ आना चाहिए इतना ही समय आपके पास है. Now simply put, I will give you both the strategies and I will end my story here. Let me know in the comments which of the two are you planning to adopt, or you have been adopting, or if there is any third strategy which you have been adopting, let me know in the comments, because that will also help you solidify it. The moment you state it कि ये मेरी strategy है, it becomes very good. It will become solidified in your head. See, simply put, if RC's first is your strategy, which is what my strategy is, I would simply do this one thing. I would give not more than 1 minute to plan one simple thing कि चारों में से कौन सी RC से मुझे start करना चाहिए. I would not even give it so much time, to be frankly, but still I am saying कि मैं इतना at max I will give, so that I could also check कि structure क्या है. कैट ने कोई गेम तो नहीं खेल दिया इस बार, कोई पैटर्न चेंज तो नहीं कर दिया है कि 4 RC ना होके 5 RCs तो नहीं कर दिए, कुछ तो नहीं कर दिया, वैसे होगा नहीं. बट स्टिल आई एम सेइंग spend the first few seconds in just finalizing कि which RC should I start with, because the first RC you start with has to be the one which is easy to read. Simple हिदायत दे रहा हूँ, एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूँ, ज्यादा सोचना मत. RCs को तुम पूरा इवेलुएट कर पाओगे नहीं कि अच्छा फर्स्ट आई सी दिस फुल RC, अच्छा ये RC क्या है, नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर नेक्स्ट आता है. ऐसे नहीं होगा. आपको जल्दी असेस करना है कि अरे यार वेट, कि वेदर दिस RC इज इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दैट, कौन सा एरिया इज समवेयर वेयर आई रियली लाइक टू एंजॉय दैट, एंड ऑल्सो विच हैज सिंपलर वर्ड्स इन इट, जो मुझे ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. ब्रॉडली यही है, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इट. व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू नाउ इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि आपको पर RC यू हैव अप्रोक्सीमेटली 7.5 एंड द रिमेनिंग लास्ट में यू विल डू योर VA. इफ यू आर डूइंग VA फर्स्ट, चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी ये है, VA में इतना कुछ चूज करने को नहीं है. इट्स नॉट दैट ओके विच VA क्वेश्चन आई स्टार्ट विद. अरे VA में वही 4 किस्म के सवाल होंगे. इट वुड बी आइदर PJ, PC, PS और दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हिच मींस व्हाट, स्टार्ट ऑफ विद VA, जो VA का सवाल आए फटाफट सारे सॉल्व करे, knowing that you should not give it more than 10 to 12 minutes, and then immediately after that quickly scout and find कि कौन सी RC simple है, वहां पे जाइए and start solving this. My dear friends, this is all that there is in your attempt strategy for VA. It's as simple as that. I do not want to complicate it for you. One thing which surely I wanted to state for you is that कि time clarity रख लेना. Time clarity नहीं है तो VA में खराब हो जाएगा, because VA में ज्यादा attempt करने का गेम है. This is not your DILR. Also, if you want my test taking strategy for DILR, subscribe to the channel, like this video so that I come in your feed, because that video is going to be a crucial one. I'll be posting it in the next 48 hours. That is important because DILR में pattern change हो सकता है, 2 extra question आ सकते हैं. If you've seen the CAT mock test, you know कुछ भी हो सकता है. That is important. वहाँ थोड़ी complexity फिर भी है, but VARC is all about this. If you want to take a screenshot and share it around with your friends, do that. Do not forget to like the channel, like the video, subscribe to the channel, so that more videos, not just up till CAT but beyond CAT, for your GDPI, interview prep, upskilling, profile building, summer internship, सब कुछ एकदम से हो जाएगा. उसके लिए आप तैयार रहें. Thanks a lot and goodbye.